हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश 2.4 एक्सक्यूजेस अ स्किट। इस लेसन का हम वर्कशॉप देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय इंटरसेक्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्किट। स्किट में से हमें करेक्ट वर्ड इंटरसेक्टिंग थ्रू यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। ओके, फर्स्ट है द हेवी लोड वुड नॉट डॉट डॉट, आंसर है मूव। सेकेंड वन है द पुलिस अराइव टू डॉट डॉट द क्राइम, आंसर है डील विथ। थर्ड वन है माई फ्रेंड डॉट डॉट मी टू ईट चॉकलेट्स इन द क्लासरूम, आंसर है ऑफर्ड। फोर नंबर है आई वॉच डॉट डॉट टू फाइंड माई लॉस्ट नोटबुक, आंसर है इन मैड रश। फिफ्थ वन है आई इंजर्ड चाइल्ड केप डॉट डॉट विथ पेन, आंसर है ग्रोनिंग। सिक्स वन है ही स्टोल द कैश एंड इन डॉट डॉट डार्क नाइट, आंसर है वैनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एज पर द नैरेटर। नैरेटर जैसे ही हमें फॉलोइंग इवेंट जो रहेंगे ना उसको रीअरेंज करना है। तो ये रही सब इवेंट्स, टोटल 8 इवेंट्स दी गई है, तो इनको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो देखो आंसर में फर्स्ट इवेंट है रितेश हर्ड अ स्क्रीम्ड फ्रॉम द मेन रोड। अ thief came running out of a shop. फोर्थ वन है द groaning man joined the thief and run away. फिफ्थ वन है a hug dog was sitting on Ritesh's school bag. सिक्स्थ वन है the dog refused to move. सेवेंथ वन है the dog began to follow Ritesh to school. एट्थ वन है the dog itself found its owner. क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस एंड राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेयर द एक्सक्यूजेस गिवन बाय रितेश फॉर हिज लेट अराइवल ट्रू, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्सेस। रितेश लेट अराइवल के जो रीजन देता था आपको क्या लगता है वो ट्रू है, और आपका रिस्पॉन्स बताना है यहाँ पे। आंसर है no, because all these incidents couldn't have happened at the same time. He was just making an excuse. The man lying and groaning with pain on the pavement started running with the thief. His description of the dog given in two places is different. He had not entered the shop before, but said that he had left his bag in the shop. The story of the dog and its owner does not sound convincing. Question 2 है Did the teacher believe Ritesh stories? How do you know that? टीचर ने रितेश की स्टोरी पे बिलीव किया, विश्वास रखा क्या, आपको कैसे समझा? आंसर है नो, द टीचर डिड नॉट बिलीव रितेश स्टोरीज. एवरी टाइम आफ्टर हिज फॉल्स एक्सक्यूज शी रिमार्क something mockingly and ironically to suggest Ritesh that his excuses were false and he had made up the stories. Question number 3 है Why did the teacher suggest that Ritesh should enter the story writing contest? टीचर ने रितेश को स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट में एंटर करने के लिए सजेस्ट क्यों किया? आंसर है द टीचर सजेस्ट दैट रितेश शुड एंटर द स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट बिकॉज शी वांटेड टू ब्रिंग टू हिज नोटिस दैट whatever excuses he had made were false and she knew it.
So she suggests him to enter the story writing contest. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट वे टू करेक्ट चिल्ड्रन हु आर रेगुलरली लेट टू स्कूल। जो स्टूडेंट स्कूल रेगुलर लेट आते हैं उनमें सुधार आने के लिए क्या बेस्ट वे है आपके अकॉर्डिंग लिखना है। ओके तो आंसर में फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे टू करेक्ट द लेट कमर्स टू make them aware about the importance of time in your life. Teachers should call their parents and ask the reason for his or her late coming and ask them to take care of their late coming. Teacher can convince such student how they lose their studies by coming late. क्वेश्चन नंबर 4 है रिपोर्ट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है रितेश मे आई कम इन मैडम। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करना है। सो आंसर है रितेश रिक्वेस्टेड द टीचर इफ ही कुड कम इन। सेकेंड है मिसेस सेन रितेश यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड। आंसर है Mrs. Sen told Ritesh that he was too early for the second period. Question 3 है Ritesh, I had left my bag at the shop. Answer है Ritesh said that he had left his bag at the shop. For number question Ritesh, I am sorry ma'am. आंसर है रितेश टोल्ड द मैडम दैट ही वॉज वेरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 है मिसेस सेन देयर इज अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन। आंसर है मिसेस सेन सेड दैट देयर वॉज अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 5 है Imagine there is a story writing competition in your school. Frame a notice about the same to be put up on notice board. Cover the following points. आपके स्कूल में स्टोरी राइटिंग कंपटीशन है। आपको नीचे दिए गए जो पॉइंट रहेंगे ये पॉइंट सब कवर होने चाहिए। ऐसी आपको एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन की नोटिस बनानी है। तो यहाँ पे है स्टोरी राइटिंग कंपटीशन की नोटिस। ओके उसमें फॉर स्टैंडर्ड 5th to 10th 3rd October 2022 at 9 AM venue school program hall. Duration of story writing will be 1 hour. There is no limit of words. The topic of the story will be given on the spot. The writing paper will be provided by the school 15 minutes before the competition. Points where judging stories will be quality of language, style, story writing skill, imagination, newness means new idea. 3 prizes will be considered for each group of student. Contact किसको करना है Mrs. Gadak teacher for giving your entries. Entry forms are available in the school office. Hurry up, participate enthusiastically. Thanks for watching video. If you like my video, subscribe my channel, press the bell icon, like करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।